Good evening, everyone. Welcome to the fifth workshop of Entrepreneurship Week. At EIC, we believe that knowledge of different domain holds an important place in any entrepreneur's toolbox. Knowing how to apply domain knowledge to your venture may determine the success of your business. So we bring to you a mega collaboration with all domain clubs at IIM Rohtak to equip all budding entrepreneurs with the key to a perfect start. For today's workshop, we have IIM Rohtak's Marketing Club Mark with us. I'll invite Priya from Mark to take the stage. Marketing happens as you recreate the product. It is in every stage of a startup. Every day, new brands are launched in the marketplace. These brands have to compete with long-standing companies and millions of marketing campaigns. What's the use of having a terrific product if nobody knows about it or can figure or it can be figured out to the customers? This is where the role of marketing comes. Welcoming to the fifth workshop of entrepreneurship, we have with us Mr. Shivam Ahuja, CEO and founder of Skill Circle, to speak about how to choose a marketing strategy at the beginning of the business. He's a prolific angel investor and venture capitalist, investing in disruptive startups. He founded Delhi Angels in 2014, one of leading angel networks of Circle Group. He's marketing consultant to some disruptive ventures like BNS International, Uber, and Oyo Rooms. He's a frequent lecturer and marketing coach at some prestigious B schools in Southeast Asia. We welcome you, sir. We would like to hear more from you about the topic, sir. Thank you so much for warm welcome, and I look forward to see you guys and look forward to meet you guys in this session. And definitely, I'll be sharing some very important things that I learned throughout the journey of my entrepreneurship, and it might help you to start your own venture and helps you do the marketing when you start your business online. So I'm definitely look excited, and I look forward to have you all the people who want to start your venture. And let's get started. So today I'm talking about the marketing strategies for early stage founders. So this is very much important topic because when you start your own venture, you don't know what kind of marketing you do. For example, a lot of people say that spend money on Google ads, spend money on Facebook ads, spend money on Facebook, Instagram ads, but you don't have money actually when you start your own business. So you'll be learning it in the early stage of business, how you can, market your business to more people and get more customers by spending less or no amount of money. That's very interesting. So that's the whole session all about. And if you're a curious marketing, if you're a curious marketer and you want to build your career in marketing, this session is for you. So let's get started. But yes, a bit about introduction. The people who don't know me, my name is Shivam Ahuja. I represented India in US a couple of times, and I consulted companies like BLS. It's an international company, world's second largest visa processing company. I consulted Oyo Rooms for marketing their business into China, and also a company called Innovate. It's a co-working space based out of Delhi. Now they have offices across India. And the founder of this venture is Ritesh Malik. And this guy sold his company for 220 crores in just 4 years of business. And I'm sitting on this office only. This is an Innovate first office, which we started in Connaught Place. And we sold this company to Oyo Rooms for 220 crore rupees. So I actually consulted them at a very early stage of business. So built a revenue of 15 crore rupees from my own company for last 3 years and amongst 30 startup influencer as per the business magazines of India. But this is not something I'm going to brag about in the today's session. I'm going to brag about what I learned because this is not what I was doing in my life. I was graduating from Amity Noida in 2012. I was doing my BTech from there. Then I joined Micromax as a sales professional for almost 2 years. Then I realized my motive, my objective of in my life is to start a company. Then I started the company and take it to the next level. So that's the idea. So I request people to just switch off their mics so that it will not be a problem for others. That's the humble request I want to make. The people who have switched on their mic, I just request you to switch off it. Perfect. So what I do in a nutshell, I run a group of companies. One of the company we have is Skill Circle. It's a training company where we train people for futuristic skills. Because what I believe is, the skills are going to be very important for future, especially this remote culture time. A lot of people want to work remotely for US companies, for American companies, for London-based companies, and they want to work remotely. So for them, skill-based jobs matter the most. Second company is we have Ahuja Media. It's an agency where we help our clients for right their marketing and technology needs out there. And the third venture is Delhi Angels, which is an investment group. In future, when you start your own venture, you need money for that. And we invest in startups with a seed capital and an angel capital. So we have a portfolio of around 16 companies. We have funded around 16 companies so far. And Innovate is one of the portfolio company we have. So that's the companies I run. But let's talk about what I'm here for session.
But yes, I met so many amazing people in the last 6 years, because when I quit my job in 2014, I started into entrepreneurship. I started networking with people, and I met this amazing guy. Do you know this guy? Anyone? Just type the name if you know this guy. The guy who are you seeing in the left. Do you know this guy? Just let me know the name of this guy in the chat box. The person which, standing just next to me. Anyone? Do you know this guy? Just let me know in the chat box. Okay, some people are saying Shreyansh is saying Gary. Very, very much right, Shreyansh. Okay, the people who know this guy is very good. The people who don't know, I request you, I suggest you to follow this guy, because this will definitely going to help you in your life. His name is Gary V, or you can say Gary Vaynerchuk. He's #1 marketer in the world as per the Times magazine, right? I got an opportunity to meet this guy at his office in New York. So I went to New York and he called me, and I met him at his New York office. But the beautiful thing is, I met this guy just because of Twitter. One day I just retweeted his tweet and he liked it and he said, "Hey, you are a nice person. Thank you so much for promoting my book." And he added me in a Facebook group, which is a secret group out there. And only 20 people were there in the world in that Facebook group. And we networked with it. I networked with the intern of Gary Vee, who's supposed to be from Delhi. He was an Indian as well. And then we met, interacted, and guess what? He invited me to Gary Vee office. And that's how, I met Gary. And Gary Vee runs a company called VaynerMedia, which is one of the largest marketing company in the world. And they market brands like Cadbury, Redison, and so many premium brands in the world. So that's the, opportunity I got to marry Gary Vee. So that's why, I want to tell you social media platform matters a lot when you start learning marketing for your own company. Okay. Moving further, so let me just take you further about this today's session. So why I'm conducting this session, first of all, you have to understand it. I just took my important time and I just, make sure that I'm just, interacting with you guys. Though I have a company to run, but still I'm just waiting here to, for this session because of 3 reasons. First of all, to help startups, to help students to start their startup, because I believe India should be entrepreneurial in nature. Everyone should start a startup if you are, conscious about it. Second is to hire team players as a founding team members of my company, because I'm in the process of, scaling my company now. But I look forward to have more founding team members from different domains out there. So, we have so many audience, good audience who is actually watching this session right now. I love to invite you as a founding team member. We can, definitely discuss the opportunities with our company, because good to have smart people in the team. And I believe you belongs to a smart lot. And after this session, we can discuss how you can be part of this team. The third is, definitely boot camp. We organize a lot of boot camps. One of the boot camp we are organizing in December. In case you want to learn more and want to build your career, I invite you to be part of the boot camp. So that's the 3 objectives of conducting this session with you. The number 1, to help you guys to start your own venture and have great free resources with me. Before I end up this session, I have a lot of free resources to give up. First of all, I'll be sharing a pitch deck of Innovate, which actually sold the company to Oyo Rooms for 220 crores. That exact pitch deck. That's very confidential. You will not find on internet. I'll be sharing with you. Number 1. Number 2 resource, I'll be sharing the startup playbook. It's one of the best resource for the people who want to start your own venture. Free of cost, is backed by Y Combinator. So Y Combinator की एक बुक है स्टार्टअप प्लेबुक, मैं आपको फ्री में शेयर करूंगा. सबसे अच्छी बुक है स्टार्टअप्स की, वो आप जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा. उसको पढ़ने के बाद में मुझे लगता है किसी का कोई स्टार्टअप का डाउट नहीं रहेगा कि टीम कैसे हायर करें, मार्केट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, MVP क्या होता है, उसके अंदर में सब कुछ है. तीसरी चीज वो मैं दूंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको. मैं सारी चीजें डिस्क्लोज अभी नहीं करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो यहां से स्टार्ट करते हैं सेशन. तो लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तो आपसे मैं एक इंटरेक्टिव है, बिकॉज हमारे पास में जो ऑडियंस है वो सारे IIMs के स्टूडेंट है. तो एक क्वेश्चन मुझे आपसे जानना है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड अ रेगुलर बिजनेस. तो मुझे कौन बताएगा एक स्टार्टअप और रेगुलर बिजनेस में डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? प्लीज 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 आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना और मुझे बता सकते हैं एक स्टार्टअप और एक रेगुलर बिजनेस में क्या डिफरेंस है? The startup maybe does not have an established market already. A business, regular business would have it. Okay. There's innovation involved in startups. Innovation. Yes, so there's innovation involved in startups. There's something new that may or may not be in a business. Very good, very good. Good one. Startups try to solve a problem. Every business solves a problem, no? You go to Kiryana store, they solve your problem.
But so like that the Kirana store is working in an existing market, so many players are there into it. But for a startup, the market is new, the environment is new, and the customers which they want to target is new because market is going to be same. The customer is going to be same. Your business plan might be different. Market is going to be same, right? The same market. The customer is going to be same, but your business line might be different. But what exactly a startup is? कोई बताएगा startup और एक normal business में क्या difference है? Anyone? Startup solves a problem that is already not solved by someone else in past. Interesting, very interesting. I am just looking for one word which is very important, which is missing right now. कोई one word मैं सुनना चाहता हूँ, अगर कोई आप share कर सको तो. Else मेरे पास तो है ही, मैं तो बताऊंगा ही आपको. कोई भी बताना चाहेगा? What's the difference between a normal startup and a regular business? Unconventional. Unconventional, that's a good word. Okay, let me just take you here. Startup is an innovative, scalable companies with a business plan. So ये scalable word बहुत important है. For example, you open a grocery store, which is very innovative with great infra, great everything out there. But it's very tough to scale a grocery store. आप पूरे इंडिया में ग्रोसरी स्टोर नहीं खोल सकते, बट ग्रोफर्स खोल सकते हो. तो दैट्स व्हाई a word scalable is very much important. So a lot of companies not able to become a $1 billion companies because the scalability factor out there. बट अगर आप कुछ सक्सेसफुल कंपनीज को ध्यान से देखोगे जिन्होंने 5 साल में ग्रो किया है, पिछले 5 साल में, देयर इज अ स्केलेबल वर्ड आउट देयर. तो टू स्केलेबल, आजकल टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू स्केल योर कंपनीज टू द नेक्स्ट लेवल. And in fact, I just read a Forbes magazine article there, mentioned every company in 2025 will be a tech company. No matter is a kind of grocery store, no matter is a hyper local store out there. Technology is going to be very important for building companies to the large level. So that's yes, startup is an innovative, scalable companies with a business plan. That as per my understanding. And very important, such companies can grow from 0 to 1 million users in few years, whereas traditional businesses can't grow that fast. तो ये भी प्रॉब्लम है कि ट्रेडिशनल बिजनेस इतना फास्ट नहीं बढ़ सकते, बट स्टार्टअप कंपनीज कैन ग्रो 0 to 1 million in few years. That's the very differentiating factor of a startup and a normal company. A lot of people say that, hey, you know what, I have a startup, I run my own agency. Agencies are startup because they're very tough to scale. So when a startup is a startup, when they have a fixed product which can be scalable. So keep this thing in mind whenever you think about joining a startup for your job or maybe as a co-founder. Perfect. These are the stages of startup I believe you must be aware of, and I'm just revising it so that we can discuss about the marketing strategy for these stages out there. So there is a project stage when you just think about, hey, this is something great, we should start on it. Then you create a business plan, then you create a business concept, then you build your team, and then seed funding happens. तो seed funding तक सब कुछ idea चल रहा है, यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे. Seed funding वो stage है जब आपको कोई पहला investor आकर एक check देता है और बोलता है, you know what, you looks good. This is my money, 10 lakh, 20 lakh, 30 lakh, and you go and build your company. Then team happens, then angel things happen, then series A, series B, and so many stages happens. So first of all, idea stage, then MVP stage, then seed stage, angel stage, series A, series B, and all that stuff. सबसे toughest होता है आइडिया से लेकर MVP बनाना और MVP से लेकर 100 कस्टमर्स लेकर आना. ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आधे बिजनेसेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं, और आधे बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, आपका MVP बन जाता है, वहां से लेकर 100 कस्टमर्स तो मिल जाते हैं, 100 के बाद में 1 मिलियन के बाद में वो खत्म हो जाते हैं, और 3 साल के अंदर में स्टार्टअप बंद हो जाता है. तो 2 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो वैलिडेट करना आइडिया को, 100 कस्टमर्स लेकर आना, और 100 कस्टमर्स आने के बाद में उसको स्केलेबल बनाना कि एक बन गया, अब एक का 100 कैसे होगा, यहाँ पे आती जाती है. तो ये आपको स्टेजेस का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से अपनी मार्केटिंग को, स्ट्रैटेजी को बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 से 100 की बात करें, आप 0 पर हो और 100 कस्टमर्स तक जाना है, यहाँ पे हम पैसे खर्च नहीं कर सकते. You don't have money to spend. You are bootstrapping your company. There is a word called bootstrap. That means you are spending your own money. आप किसी से पैसे मांगने नहीं जा रहे. तो आप bootstrap अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आप पैसे नहीं खर्च कर सकते. जबकि जब आप सीरीज ए पे आ जाते हो तो पेटीएम टाइप कंपनी बन जाते हो. You have lot of money in the bank. इन्वेस्टर कहता है जाओ 1 करोड़ रुपए खर्च करो, जाओ एक महीने में 50 करोड़ खर्च करो, and you have lot of money in the bank, like Byju's and the White Hat. White Hat पे प्रेशर है, उसको हर महीने 50 करोड़ खर्च करने हैं. You know that White Hat is so much money in the bank account. Now they are aggressively spending on Facebook ads, Instagram ads. तो जबरदस्त पैसा खर्च रहे हैं because investors ने metrics set कर दिए कि आपको ये metrics achieve करनी है. Are you able to get that? अभी तक ये जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? Just say yes in the chat box so that I get to know my audience is very much interactive in this.
So just say yes अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है. Everyone. Shruti, Dipanshu, Prerna, Ananya, Kasturi, great. Perfect. Now I believe सबको समझ में आ रहा है. और interaction कर सकते हो because सबके answers नहीं आ रहे मेरे पास में. बाकियों को समझ में नहीं आ रहा. Everyone, I just want your answers. Great. Moving further, अब हम आगे चलते हैं. अब हम marketing strategies की बात करते हैं कि जब आप marketing strategies बनाते हो early stage companies के लिए, जब आप seed stage पर होते हो या फिर आपका no or less revenues होता है, तो उसके लिए marketing strategies की discuss करते हैं. So let's discuss two very important strategies. It's 6 o'clock. The first strategy is personal branding. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग अपनी personal brand बना रहे हैं. Instagram में आजकल हर दूसरा इंसान आपको entrepreneur दिखता है. ऐसा होता है. You know, entrepreneurship is a new guitar these days. Everyone is playing this guitar. So this is why, you know, personal branding very important. Elon Musk का example लो. Elon Musk आज से 5 साल पहले सिर्फ $200 million की net worth पे था. You know Elon Musk, right? Everyone knows Elon Musk. Say yes. Just say yes in the chat box. Everyone. That's very obvious, right? He was sitting on a net worth of just 200 million, even less than that, around 5 years back. Today, he's the world's second richest person of the planet, of our Earth, right? So this is very interesting how this journey looks like because he built a very strong personal brand. तो आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांड सिर्फ यूएस कंपनीज में बनता है, यूएस में बनता है, यूएस आउट ऑफ इंडिया बनता है, ऐसा नहीं है. इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल ब्रांड बनाया है. टेक एन एग्जांपल. और दूसरी स्ट्रैटेजी है, एक तो है पर्सनल ब्रांड बनाओ, दूसरा है कि अपनी कंपनी को मार्केट करो 100 कस्टमर्स लेने के लिए. बिकॉज बहुत सारे लोग शाय होते हैं, दे आर नॉट वेरी ओपन अप. तो उन्हें पर्सनल ब्रांडिंग अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर पाते then they can market their own company so that they can get more customers. I'll just give you an example. Take an example of personal brand. तो पर्सनल ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो है लिंक्डइन. लिंक्डइन पे आप सब हो, बट सिर्फ होना इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू शुड नो हाउ टू यूज लिंक्डइन. So I'll be, teaching you the basic stuff, how you can do, LinkedIn, so that you can, get more clients, more network, more partners. The second is angel.co. Have you heard about this platform, angel.co? Just say yes or no in the chat box. If you have heard about angel.co, just say yes. If you know, just say no. Because I'll be explaining you why angel.co is so powerful platform. Shruti is saying yes. Vaishnavi is saying yes. Angel.co. Okay, a lot of people knows about it. That's so surprising for me because whenever I ask from college student, they don't know about it. Very beautiful stuff. So let me just, once I just go through the angel.co platform so that you get to know what exactly is angel.co in case you're not aware about. And this is one of the beautiful platform where you can, network with startups, even list your company. If you're a startup, you can list your company and hire people, hire good talent. So similarly, if you can see my profile out there, if you're able to see my screen, let me just open my screen for you. I hope I'm visible. So you can see that, a lot of jobs are there, a lot of opportunities are there. You can find co-founders as well on this platform. So this is one of the beautiful platform you can consider, angel.co. I've shared the URL in the chat box. You can just consider that as well. It's angel.co. Absolutely free. You can sign up over there and you can build your network from there. Perfect. Third is Instagram. Very underrated platform. A lot of people, building their brand on Instagram and, networking with people. Of course, Facebook, though the organic reach is very less, but still Facebook is very relevant for your personal branding out there. And some growth hacks. In fact, I'll be sharing a growth hack of finding anyone's number. You can find anyone's number, anyone who is present on LinkedIn. Take an example of Ritesh Agarwal, Ankur Warikoo, the founder of India Mart. आप किसी का भी नाम बोलो, आप किसी का भी number ढूंढ सकते हो free of cost. So I'll be sharing a small hack that is going to help you to leverage your network out there. Okay, so these are some names of the successful founders who build their entire business from their personal brand. मतलब कुछ ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस पर्सनल ब्रांड पे बनाया. Elon Musk, you already know, right? Second is Ritesh Agarwal. You know Ritesh Agarwal, the founder of Oyo Rooms, but very less people knows about that. Ritesh is one of the brand who built by media, who built by startup media out there, because he got the Thiel Fellowship in the very early days. How many people knows about Thiel Fellowship? How many people knows about Thiel Fellowship? Thiel Fellowship. Very important. Shreyans knows about it. Anyone else? Yes, Shreyans, very much correct. So basically, Thiel Fellowship, Peter Thiel is a very known investor in US. His name is Peter Thiel. He's the first investor of Facebook. And if I just open his profile, this is the guy, Peter Thiel. And he runs a fellowship program of almost $100,000 for the people who drop their college.
Imagine, Dipanshu is an IM student and he just dropped his college and Peter Thiel will give him $100,000. That's Peter Thiel's statement is. क्यों देता है वो? Because he wants innovative ideas. He wants people who have disruptive mind. So अगर आपकी एज 22-23 साल से कम है, that's the kind of criteria they have. चेक करना पड़ेगा शायद उन्होंने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई. अगर ये आपकी एज 22 से 23 साल से कम है और आप कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहते हो, अपना आइडिया लिखो, पीटर थील की एप्लीकेशन पे साइन अप करो और अगर सेलेक्ट हो गए तो आपको 100,000 मिलेगा और सबसे बड़ी बात मीडिया अटेंशन मिलेगा. रितेश को भी यही मिला. रितेश वाज द फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप, ओयो रूम्स वाज द फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप जिसको पीटर थील की फेलोशिप मिली थी. एंड गेस व्हाट, फेलोशिप मिलने के बाद में ही वाज द हीरो. जैसे $100,000 मिले, सब इन्वेस्टर्स आ गए पीछे पीछे, अरे पीटर थील ने आपको पैसे दिए हैं, मेरे से भी ले लो. एंड देन गेट लॉट ऑफ मनी. ही डिडंट हैव एनी कॉलेज एजुकेशन, कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं थी उसके पास में. एक आइडिया था जो कि स्केल किया जा सकता था, पर उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था. पीटर थील को अच्छा लगा एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. तो इसलिए मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग करते हुए. अंकुर वारिकू इज अ सिमिलर नेम. अंकुर वारिकू एज सच इज नॉट अ वेरी बिग कंपनी आउट देयर, बट इज द फाउंडर ऑफ अ स्मॉल कंपनी कॉल्ड Nearby. एनीवन हर्ड अबाउट Nearby? Nearby किसी ने सुना है Nearby का नाम? श्रेयांश ने सुना है, श्रुति ने सुना है, प्रेरणा ने सुना है. It's a deal discovery platform. It's based out of Gurugram. You can discover a lot of deals out there. So he's the founder of Nearby, but less people knows about Nearby. More people knows Ankur Warikoo because he's a very much active on LinkedIn, Quora, social media platform. Create a lot of small videos, large videos, and he engage people. So as a personal brand, he attract a lot of investors, a lot of partners, a lot of customers as well. So this is a very good example where you can create your personal brand and can attract a lot of stakeholders in your business. So I strongly advise you to follow this guy. He creates a lot of good content on LinkedIn, Instagram, and Facebook so that you can learn more about personal branding from him. Perfect. Moving further, I'll just take you to the next level. Let's start from here. So a lot of people say that, magical formula of creating successful brand. I should that, create a lot of attention grabbing content. So idea is अगर अपना strong personal brand बनाना चाहते हो तो जितने भी social platforms हैं वहाँ पे आप ऐसा content post करो जो attention grab कर सके. That's very much important. तो मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ points बताता हूँ जिसने मुझे help किया personal brand बनाने में और especially marketing करने में at a very early stage. तो first of all leverage social media platforms. There is no doubt about it. मेरे लिए Instagram और LinkedIn बहुत important platform रहे. जब मैंने LinkedIn यूज किया, मैंने 2012 में LinkedIn पहली बार यूज करना सीखा. मुझे पहला असाइनमेंट मिला USA एज अ स्पीकर का इन मियामी एट अ वेरी अर्ली एज. देन आई रियलाइज कि मेरे अंदर तो इतना कुछ है भी नहीं, उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर बुला लिया. एंड व्हेन आई वेंट देयर, मोर देन 5,000 बिजनेस ओनर्स अटेंडेड मी and I network with them after my speaking session. A lot of people network with me and they give me a lot of opportunities. So that's why, leverage social media platform. They looks underrated. You feel bored while LinkedIn is there. I don't need a job, but this is one of the most amazing platform that you can do for. Create a lot of video content. अगर आप ध्यान से देखो, you must be active on Instagram. I believe everyone is on Instagram. Just say yes if everyone is on Instagram. Just say yes in the chat box. Anyone create reel content? Reels कौन कौन बनाता है? I don't want to ask TikTok कौन कौन करता है, but Reels is a much better name out there. How many of you create Reels content? कोई करता है Reels content? No. If you create one piece of real content, अगर आप real content create करते हो जो Instagram का नया feature है, you'll be realize your reach is very much high. अगर आप एक छोटा सा content डालते हो तो आपका जो real content है वो आराम से 2 से 5,000 लोग देख लेंगे. और अगर आपने ये समझ लिया, if you understand this is a great growth hack. Video content is the future, is the present. So if you understand the real content, you can do so much amazing in your online marketing strategy. Third is post frequently, because the algorithm are made in such a way that the people who are posting regularly, they will get more views comparative to the people who are creating a lot of good content, a lot of quality content, but they're not putting in quantity. On social media, quantity matters. Okay, I repeat again, quantity matters. Of course, quality matters, but quantity matters even, because in algorithms, that's how Instagram algorithm and Facebook algorithm, functioning like that. Engage with others, very much important. If you're putting a comment on LinkedIn, then it will create more vibrations and it will give you more connects. So even you're commenting on LinkedIn, it matters the most. At least create 10 comments every day on other posts. And it should be, valuable. It should not be great, thank you, it was nice, it was nice meeting you, not like this. It was like valuable comment. Your perspective, your thought perspective, it should be there. Create a community. The successful companies these days are creating a small group, even on Telegram,
even Discord or maybe a Facebook group. You have to create a community of your brand so that people can engage with each other. So these are the very important points. Apart from that, you should follow influencers so that you can observe them, how they are differentiating the content. So this is very much important, for building a personal brand. आगे चलते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं. मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म थे वो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, बिकॉज मैंने बहुत सारी नेटवर्किंग इन दो प्लेटफॉर्म से की है. So let me just share a very good quote I learned from Gary Vee. Gary Vee says Instagram DM feature is exactly like what email looks like in 1990s. जो Instagram का DM feature है वो बिल्कुल सेम है जो ईमेल था 1990s में. जब 1990s में ईमेल आता था, शायद हमने वो देखा नहीं है. So it's just like कि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि ईमेल कितना पावरफुल है, तो लोग लिखते थे और हर ईमेल लोग खोलते थे. सिमिलरली इंस्टाग्राम डीएम फीचर, अगर आप 10 लोगों को डीएम करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 10 में से 5 लोग जरूर पढ़ेंगे. सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट डीएम फीचर. तो इसलिए डीएम फीचर को आपको बहुत कंसीडर करना चाहिए और इंस्टाग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको डीएम करना चाहिए. ओके, so by the way, you can follow me on Instagram. I try to create good content on Instagram and you can follow me here. This is my handle, instagram.com/shivam.ahuja. So this is my Instagram handle, the people who are asking for it. And now let me take you the platforms where you can learn more interesting things out there. So let me take you the, kind of some growth hack. So before I tell you more about what is growth hacking, so this is the growth hacking basically, if you know about. So growth hacker is someone who has thrown out of playbook of traditional marketing and replaced it with only what is testable. So growth marketers वो होते हैं जो कुछ ऐसी out of the box strategies करते हैं जो normal contemporary marketers नहीं करते. और this is very much powerful in 2020 and beyond, because आजकल हर कंपनी growth hackers को hire करना चाहती है जो normal marketing नहीं करते, differentiate marketing करते हैं. So let's understand how you can create a growth hack. So अगर आपको growth hack में जाना है और आपको अपनी growth hacking strategy बनानी है अपने startup के लिए, अपने business के लिए, you have to understand आपको इनमें से कुछ steps करने पड़ेंगे. या तो आपको बहुत सारे emails collect करने पड़ेंगे. अगर आप Facebook की अर्ली डेज की स्ट्रैटेजी देखो कि Facebook ने कैसे अपने आप को पॉपुलर किया था, उन्होंने सबसे पहले जिस कॉलेज में वो थे उस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए. अल्टीमेटली जब स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उन्हें एंगेज करना स्टार्ट किया. अगर आप में से किसी ने फेसबुक मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि फेसबुक कैसे स्टार्ट हुआ था. तो सिमिलरली अगर आप अपने आप को ग्रोथ हैकर बनाना चाहते हो, ग्रोथ हैक की फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको लॉन्च ईमेल सीखना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है और लोगों को अपने साथ में जोड़ा कैसे जाता है. सेकेंड इज प्रोडक्ट हंट, विच इज वेरी पॉपुलर वेबसाइट प्रोडक्ट हंट. अगर आप कोई टेक प्रोडक्ट बना रहे हो तो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आपको प्रोडक्ट हंट दे सकता है, बिकॉज ये बहुत प्लेटफॉर्म बहुत फेमस है और टेकीज का बहुत फेवरेट है. तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, प्रोडक्ट हंट पे लॉन्च करो. डे 1 पे ही आपको करीबन 1000 यूजर्स मिल जाएंगे अगर आपको कोई टेक प्रोडक्ट है. नंबर 3 इज रेफरल मार्केटिंग. हम जानते हैं कि रेफरल मार्केटिंग बहुत पावरफुल है और दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका रेफरल मार्केटिंग का भी है. तो अगर आपका बिजनेस है जिसमें आप रेफरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे ड्रॉपबॉक्स ने की थी. अगर आप ड्रॉपबॉक्स पढ़ोगे, ड्रॉपबॉक्स की सबसे ग्रोथ हैक मार्केटिंग के बारे में, तो गूगल पे जाके अगर आप ग्रोथ हैक ऑफ ड्रॉपबॉक्स लिखते हो तो आपको पता चलेगा ड्रॉपबॉक्स ने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी निकाली थी. अगर आप ड्रॉपबॉक्स को रेफर करते हो तो आपको 2 GB स्पेस मिलेगा. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अगर आप ड्रॉपबॉक्स को रेफर करते हो अपने फ्रेंड को तो आपको 2 GB फ्री स्पेस मिलेगा. और इस तरीके से ड्रॉपबॉक्स ने अपने 1000 कस्टमर शुरू में जोड़े थे और ये बहुत बहुत ज्यादा हो गए थे कम टाइम. तो दिस इज वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हो. और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जिनके बारे में अभी डिटेल में मैं नहीं बताना चाहता. मैं अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज पर आता हूं ताकि आप इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सको कि कैसे हम यूज कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत अर्ली डेज पे. तो एक काम करता हूं, मैं लिंक्डइन खोलता हूं सबसे पहले. एंड इफ यू आर अवेलेबल ऑन लैपटॉप, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर लिंक्डइन एज वेल. I'm just teaching you a way how to find anyone's number. आप किसी का भी नंबर ढूंढ सकते हो on internet using this strategy. So let me just show you how you can do that. Are you ready for it? Everyone open their LinkedIn. Just say yes in the chat box. अगर आप yes कर दोगे chat box में तो फिर मैं आपको ये दिखा पाऊंगा. Okay, now a lot of yes are coming up. तो मैं एक बार LinkedIn login कर लेता हूँ. Just let me log into the LinkedIn from other account because this is my account. I don't want to open from my account. Let me just open from my colleague account. Okay. So you have to install an extension called Easy Leads. So there is an extension called Easy Leads.
You have to install it from Google Chrome, and once you install it, you'll be able to use it, and you can find anyone's contact number on LinkedIn. So let me just do it for you. Just download extension called Easy Leads. Let me just open the website for you. This is the website. You have to visit the website easyleads.com. And there is an option of install extension. You have to install this extension. Easyleads.com. It's absolutely free. You need not to pay anything. And let me just log into my LinkedIn account. Okay, done. And everyone install the extension. सबने कर लिया? Done, everyone. This is very interesting. Though it's a very small hack, but sometimes very much handy. You can, make use of it. Done? Just say yes. Just type done if you're done with it. So if you're done, tell me any person जिसका आप number जानना चाहते हो. Let me know in the chat box. आप किसका number जानना चाहते हो? राजन सिंह, बाइजू में किसका number? बिल गेट्स शायद लिंक्डइन पे नहीं होंगे. अंकुर वारिको को देख सकते हैं. तो लेट्स चेक अंकुर वारिको. ओके, तो मैंने लिखा अंकुर वारिको. तो ये अंकुर वारिको की प्रोफाइल है और इसका नंबर ऐसे तो नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है. यहाँ पे देखो एक जैजी बाल आ रहे हैं यहाँ पर, और मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट कॉन्टैक्ट आ रहा है लिखा हुआ. ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पर्पल कलर का, दिस हेडर पॉप इन. मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया गेट हियर टू मोर कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पर अभी कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है इनका. किसी और को देखता हूँ, मे बी निखिल कमात. तो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड निखिल कमात. इनका एक बार चेक करते हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ Zerodha. इनका चेक करते हैं. निखिल का आ गया. आपको निखिल का नंबर दिख रहा है? जस्ट से यस. अब्यूज मत करना बस इनको. निखिल कमात का नंबर हमें मिल गया, ईमेल भी मिल गया. दिख रहा है सबको? जस्ट से यस. इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग. सो इट लुक्स लाइक अ मैजिक. नो, पहली बार मैंने देखा था. वाओ, इट्स सो अमेजिंग. But it's very obvious, right? A lot of people have, or this is absolutely free of cost. आपको क्रेडिट मिल रहे हैं 5 क्रेडिट मिल रहे हैं. बट डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं. आप पता नहीं कितने 100-200 लोगों के देख सकते हो, क्योंकि दिस इज जस्ट वन टूल, इजी लीड्स. ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं. तो द आइडिया इज टू बिकम अ ग्रोथ हैकर, बिकॉज ग्रोथ हैकिंग में बहुत सारी चीजें आती है. तो मैंने आपको तो जस्ट एक टूल बताया, ऐसे करीबन 50 से ज्यादा टूल्स हैं जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर सकते हैं और आप इससे और बेटर चीजें कर सकते हो. तो इफ यू आर फाउंडर, इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, I repeat again, this is one of the best time to start your own company. Lot of resources are there in the market to help you to become a marketer, to help you start your own company. But the only way is take action. You know what? I in the last so many years, I helped more than 100 founders. मैंने कम से कम 100 founders को help किया है उनकी companies को scale करने में. But I've realized is, I met 10,000 people. Out of 10,000, just 100 people convinced to start their own company. So it's not very easy when you start your own company. You have to tell your mind, you have to program your mind. Why should I start? Why not to join a company? Why not to join a job or something? So it's tough to start a company. And you have to realize 1 out of 10 is going to survive. 9 are going to shut down. And that's totally fine. If you fail the fear like, मेरी company तो बंद हो जाएगी, I should start or not, तो आप गलत सोच रहे हो. Every 9 companies out of 10 are going to shut down. Because that's how startups, works. 10 में से एक कंपनी चलती है और 9 शट डाउन हो जाती है. टोटली फाइन. तो आप ये प्लीज दिमाग में रखना जब भी आप अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे.
अगर आपकी कंपनी शट डाउन हो रही है, टोटली फाइन, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है स्टार्टअप में. बट द आइडिया इज टू हैव मेंटोर्स, टू हैव एडवाइजर, टू हैव स्मार्ट पीपल ऑन योर बोर्ड इज सो दैट योर सक्सेस रेट कैन बी हाई. जो गलती हमने की स्टार्टअप्स में करने में, वो गलती आप ना करो. दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन कंपनी. So that's the idea, and I just take you to the next slide. Yeah, these are the growth hacks that you keep in mind. जो मैंने already दिए हुए हैं. You can take this presentation. I'll just share this presentation with your president of this society, and they can share you further. But yes, press release matters the most. तो जो आप press releases करते हो इंटरनेट पे, वो भी बहुत मैटर करती हैं आपकी पार्टनरशिप्स को ऑनबोर्ड करने के लिए. Take an example. I just had an interview with Asia magazine. There is some Asian magazine. एंड वो इंटरव्यू अभी तक मेरा लाइव है. एंड इस एक इंटरव्यू की वजह से मुझे कम से कम 10 पार्टनरशिप्स क्रैक करने को मिली. So if you see this my interview on Tech in Asia magazine, so this interview helped me to get at least crack 10 partnerships when I was in early days of my startups. So you have to make sure you can write your story, you have to create your content, tell to the world you are starting something. And the beautiful thing is, a lot of platforms are free. You can post your stories for free. Take an example of, there is a feature in Your Story. अगर आप स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हो तो there is a magazine called Your Story. Have you heard about it? Your Story. Everyone, have you heard about Your Story? Very less people will tell you there is a section in Your Story which is My Story. आप My Story में जाकर अपनी खुद की स्टोरी पब्लिश कर सकते हो, absolutely free of cost. आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्टोरी लिख दो, मेरी स्टोरी लिख दो. There is an option of My Story. Just go to the My Story section. Create your bio, create your photo, write your story and publish it. And Your Story will publish it. And after that, story link, you can share it with friends, say, what, I featured by Your Story. A lot of people do that. In the early days of startup, you have to get attention. The right word is get attention. And if you're getting attention, that's the best thing you can do. ठीक है? तो ये चीज थी आपकी more of, giving you some early traction when you're in early stage. एक बार अगर early stage को cross करके आप at least सीड स्टेज पर आ जाते हो, आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, देन यू विल मार्केट फॉर द इन्वेस्टर्स. आई रिपीट अगेन, देयर द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफरेंट. आप कभी कस्टमर्स के लिए मार्केट कर सकते हो, कभी इन्वेस्टर्स के लिए कर सकते हो, कभी आप टीम को फाउंडर ढूंढने के लिए कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफरेंट, बट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, देन द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज ऑन लिंक्डइन. स्विगी के को फाउंडर का बोलना है कि मुझे पहला इन्वेस्टर 30 रिजेक्शंस के बाद में मिला था. अगर आप स्विगी के इन्वेस्टर का इंटरव्यू पढ़ते हो, उन्होंने 30 जगह पे पिच किया था, रिजेक्ट कर दिया था, 31वें इन्वेस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया था. तो बी प्रिपेयर फॉर इट, राइट? बी टोटली प्रिपेयर फॉर द रिजेक्शंस आउट देयर. और उसके लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स को मार्केट करने के लिए, वो है ट्विटर. ट्विटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मार्केट टू द इन्वेस्टर्स. शायद आपको ट्विटर से इतने कस्टमर्स नहीं मिलेंगे जितने इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे. And interesting thing about Twitter is, every investor is on Twitter. That's the best thing. आपको शायद Instagram पे नहीं मिलेगा, आपको Facebook पे नहीं मिलेगा, but Twitter पे जरूर इन्वेस्टर मिलेगा. So it's your goal. What's your goal as a marketer is like be, वो आपको पता होना चाहिए. Okay. So conclusion मतलब खत्म नहीं हो रहा अभी सेशन, but yes, I made a conclusion for it. If you want to start a startup, the best time is, the best time was yesterday, and the second best time is today. lot of people are thinking about it. अभी पेंडेमिक चल रहा है, अभी प्रॉब्लम है, चीजें नॉर्मल होंगी तो मैं स्टार्ट करूंगा. यहीं पे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है. अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओ, मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब मैं था 2008 में, तब रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन आया था, बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी. बट इफ यू सी केयरफुली, सबसे सक्सेसफुल कंपनीज उसी टाइम से निकली थी. 2008 और 2010 में बहुत सक्सेसफुल कंपनीज निकली थी. द रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी हिडिंग इन दिस पेंडेमिक. एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू फाइंड दैट. And if you're able to find that, you can be a scalable company out there. अगर आप ध्यान से देखो, इस एक साल में एजुकेशन कंपनीज कितनी ग्रो हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, तो देयर इज अ स्कोप. आपको बस स्कोप ढूंढना है और उस पे काम करना है, एक अच्छी टीम बनानी है, अच्छा सीड इन्वेस्टर ढूंढना है. That's how the best beginning looks like. Yes, so as I promised, these are the kind of bonuses. So the bonus number 1 is startup playbook. How many of you want it? Just say yes. The bonus number 1. It's one of the best book by YC. मेरे हिसाब से बुक ऐसी है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, फिर आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है. बिकॉज Y Combinator इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच बैक स्टार्टअप. सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है मेरे हिसाब से, और जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो YC में जाते हैं. जैसे आप IIM में पढ़ते हो, बिकॉज IIM वन ऑफ द प्रीमियम कॉलेज इन इंडिया. सिमिलरली YC इज द बेस्ट कॉलेज एग्जाम्पल से फॉर कॉलेज फॉर स्टार्टअप्स. 3 से 6 महीने का प्रोग्राम होता है.
पैसे लेता नहीं है, वाईसी पैसे देता है, $100,000 देता है जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और उनसे कुछ इक्विटी ले लेता है उनकी कंपनीज के. तो लेट मी गिव यू द बुक ऑफ स्टार्टअप प्लेबुक. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. मैं आपको अभी दे देता हूं. ये बुक यूज करके आप अपनी स्टार्टअप जर्नी को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हो. एंड दिस इज रिटन बाय सैम एल्टमैन, हु इज अ वाईसी फाउंडर. दिस इज द बुक लिंक आउट देयर. मैंने आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आइडिया कैसे सोचें, ग्रेट टीम कैसे बनाएं, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, एग्जीक्यूशन कैसे करें, एंड एवरीथिंग, यू नो, व्हाटएवर यू नीड्स इन अ स्टार्टअप. एब्सोल्युटली फ्री. मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हो. पॉडकास्ट की फॉर्म में भी है और टेक्स्ट की फॉर्म में भी है और वीडियो की फॉर्म में भी है. आपको इस सब इसका फॉर्मेट देख सकते हो. द सेकंड वेरी यूजफुल रिसोर्स आई वांट टू गिव इट इज लिस्ट ऑफ 1000 स्टार्टअप्स बैक्ड बाय वाईसी. तो जब मैं बहुत अर्ली डेज में था और रिसर्च कर रहा था स्टार्टअप्स के बारे में, तो मुझे पता चला न्यूजीलैंड में एक कंपनी है जो इतनी इनोवेटिव है बट इंडिया में किसी को नहीं पता. तो कांट वी कॉपी देयर बिजनेस मॉडल? अब आप बोलोगे तो कॉपी कैट हो जाएगा. कॉपी कैट कुछ नहीं होता. इनोवेशन करेंगे उसमें. आप बिजनेस मॉडल को कॉपी कर सकते हो बट प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हो. ओला ने उबर को कॉपी किया बट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में शायद इनोवेशन होगा, तभी इतनी स्केल किया. और इतनी सारी कंपनीज है जो कॉपी करती हैं. बट अगर आप कॉपी स्मार्टली करते हो और इनोवेशन के साथ में करते हो, यू कैन बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न आउट देयर. और ये लिस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. और ये लिस्ट देखकर आप दुनिया की किसी भी अच्छी कंपनीज को चेक कर सकते हो जिन्हें रिसेंटली फंडिंग मिली है कुछ साल पहले, और उस एग्जैक्ट मॉडल को या तो इंडिया में ला सकते हो या फिर वाइस वर्सा कि इंडिया कंपनी को बाहर ले जा सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. डू यू वांट दैट? जस्ट शो मी योर enthusiasm. Come on. No, you're smiling. You know, show me your enthusiasm. Just say yes in the chat box. I need at least 50 yes. Then I'll give this book, not book, this list out there. Okay, Sanjana wants that, Dhruv wants that, Lavish wants. Free की चीज सबको चाहिए. That's the best thing. आने दो. बाद में पढ़ लेंगे. Okay. बट मेक श्योर कि आप पढ़ो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्री में ले लेते हैं, वो पढ़ा रहता है, और स्टार्टअप करना मैं देती हूँ तुझे बुक, वो वाली मत करना. मेक श्योर अगर आप, इफ यू गेटिंग अ रिसोर्स which is a validated resource, just go through it. Okay, so the resource is YC list. This is a beautiful list out there. बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में. It's yclist.com. I'm just giving you the list URL. This is the URL, yclist.com. यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी with their name, with the one line statement what they are solving and which country they are from. Country भी आ जाएगी. तो अगर आप यहाँ पे देखो कितनी सारी कंपनीज हैं. मैं जूम करके दिखाता हूँ कोई. टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस अ कंपनी कॉल्ड सुनु, SUNU. करती क्या है मुझे भी नहीं पता, देखते हैं. सुनु क्या करती है? sunu.io इनकी वेबसाइट है. और सुनु डेवलप्स डिवाइसेस दैट ऑगमेंट्स ह्यूमन कैपेसिटीज टू एम्पावर द डिसेबल्ड. तो सोशल वेंचर है. वेरी इंटरेस्टिंग. तो कितनी सारी कंपनीज है जो कुछ कुछ कर रही हैं. आपको क्या लगता है सारी कंपनीज इंडिया में हैं? सारे आइडियाज इंडिया में हैं? नहीं. If you are smart, find one company, tweak their product, get launched in India, raise the seed investment, become the next Ritesh Agarwal. You know, there are a lot of opportunities in the market. It's just like you should have drive of being an entrepreneur. And if you have that, internet is so powerful, you can do everything. तो सब कुछ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे. तो ढूंढने वाले लोग चाहिए, करने वाले लोग चाहिए, ताकि वो एग्जीक्यूशन हो सके. So that's the list, yclist.com. I already shared the list with you. Do the homework. Just go through the 10 good companies out there and try to, you know, figure out their business models or, you know, everything out there. Okay, you want more bonus? Yes, I have a bonus number 3. Again, free of cost. I'll give you the Innovate pitch deck. The company Innovate, which acquired by OYO Rooms for 220 crore rupees. It's the confidential pitch deck, very confidential. But I'll be sharing with you over your email. You'll be getting the pitch deck over your email. The email you registered on the Zoom link. Is that all right? Just say all right in the chat box. So I'll give you 3 bonuses till now. Okay. I'm not able to see smiling faces. ऐसा attendance के लिए तो नहीं बिठाया ना आपको? I hope that's not an issue. Is it an issue? No, sir. Okay. Perfect. So I promise the third one will you get in the email by tomorrow. You'll be getting the pitch deck of Innovate. Or some more companies. I'll try to add some more companies. The people who have raised money, right? Internet पे आपको वो तो बहुत मिल जाएंगे जो sample pitch deck format and all. I'm seeing the real pitch deck they use for raising money. So that's very interesting. You'll be getting that. Okay. So far, you know, आपको समझ में आया कि, you know, क्या क्या चीजें होती हैं.
Now I'll be inviting some people to who want to become part of my team, and the people who want to work with me, because I really want more people, enthusiastic people who want to work with me. And we are organizing this digital marketing bootcamp we call DMP, and every year we organize it in the month of December. This year we also doing it, and the idea is you'll be learning so many good things in this bootcamp. For example, you'll be creating a website of your own. आप खुद से एक website बनाओगे. You'll be learning social media marketing in depth. How to do LinkedIn viral marketing, growth marketing, Quora marketing, Instagram ads, Facebook ads. ये सब आप सीखोगे. And that is my favorite, which is Google ads. You'll be learning how to make a campaign, how to run an advertisement, how to become a Google certified manager, and all these things. So we'll be launching this bootcamp in the first week of December. And I invite you to become self-independent, because in the past we have seen that a lot of students who learn from us, they're getting good money by freelancing. Like there is a guy called Pavitra Kumar. When he came to us, he was a salesperson. He was selling credit cards. And today he's making more than 2 lakh rupees from his blog. And his blog says yourselfcoach.com. He makes more than 2 lakh rupees. This guy, Shivam Verma, he's a student of Delhi University. He teaches guitar online. And he used digital marketing to promote his guitar classes. Makes 50,000-70,000 rupees a month as a college student. So very interesting students are doing amazing things. And I invite you to be part of the bootcamp. How to do that? I'll be sharing the link for that as well. So these are more of online live classes. You'll be getting, live online classes, 16 classes a month, and 1 month internship with me in our Ahuja Media company, where we get real clients, real, campaigns out there. And of course, in case you want some internship assistance, we're happy to help you, because we have a lot of companies who partner with us, but we'd love to have you as well in our own company. So this is a bootcamp link out there. You can, join it from there. But the only catch is it's just limited to 25 students. It's skillcircle.in bootcamp. You can go there, just register yourself. You can be part of it. So look forward for it. And 25 students can enroll in that. You'll be certified by Facebook, Google, and so many of these certifications. You can work for it. And rest, that's my team. I am privileged to have Ritesh as a advisor in my company. He's there in the day one when I start my company. And I was there with him when he started his own company. So that's the kind of, startup culture is all about. So I'm so excited to have you all. And in case you want to ask any questions specifically, I have my 10 minutes with you. I can answer all questions related to marketing, startups, funding. I can, help you answering that. So in case you have any question, you can, ask that. Sayandeep, Kasturi, Shruti, Ananya, Prerna. A lot of people are actually messaging me as well. So आप मुझसे पूछ सकते हो, या तो chat box में पूछ लो, या through video you can ask it, because you have already video camera on. You can ask from there as well. Everyone. Any question that you want to ask, that you want me to answer? I'm happy to help you. Sir, I have a question. Can I go ahead with it? Please. So while defining a startup in the initial phase of this discussion, you have mentioned that scalability is one thing which defines a startup, right? But my question is, how do we draw a line between scalability and sustainability? And the reason I'm saying so, you have also mentioned about White Hat Junior, right? They are getting a lot of investments, and the investors are kind of forcing them to spend their money. They have so much to spend. So now we also know what White Hat Junior is. I mean, the marketing strategy, they're silencing people who are kind of not agreeing with their policies and everything. So that is not a sustainable thing to do, right? What they are doing is, so I mean, my question is, how do we differentiate between scalability and sustainability? So I would say, and which is more White Hat Junior is very much sustainable business, but their ethics are not good. Their business ethics are not good. So if you talk about, India में हर parent बच्चों को coding सिखाना चाहता है. It's an aspirational thing. It's a great business model, but the ethics of the business is not right. The marketing communication is not right. They're over promising, the students out there. So that ethics is not good. So if you talk about it, White Hat is a sustainable model or not, it's 100% sustainable. Education is sustainable in India. But if you talk about the business ethics, we have, different point of view. I believe, they're not very good at it. That's the problem they are facing right now. Okay, sir. Thank you. That answered my questions. So yes, sustainability matters, and scalability also matters when you want to scale your company as well.
Any other question that you want to ask? Please let me know, everyone. Sir, Yes, sir. I wanted to ask something. You've mentioned a lot of growth hacks for using social media and online platforms. But if you want to start a business, for example, that is more on the ground, which deals with people who are not present on social media. For example, you want to do something in rural areas where the only social media they use is, let's say, WhatsApp. So how do we market our business to such a customer base? So you have to think. You have to first of all understand the customer persona. Take an example. I know a beautiful company called Shop Kirana. ठीक है? इंदौर की base company है Shop Kirana, and I met this guy around 4 years back when he was very new to the business. And उसने क्या किया? Local retailers को empower किया. जो भी local retailers थे, उनको क्या problem होती थी कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से सामान मंगवाते थे तो कभी सामान होता था या कभी नहीं होता था. लेकिन इसने क्या किया? रियल टाइम इन्वेंट्री आप चेक कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर की, और जो ऑफर्स है वो भी आप देख सकते हो. तो इसने रिटेलर्स को एम्पावर किया और स्टार्ट किया व्हाट्सएप से. तो व्हाट्सएप से स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को अपनी ऐप पे लेकर आया, एंड टुडे दे हैव अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एवरी मंथ. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. तो ऐसा नहीं है कि जो रूरल एरियाज हैं कि आप उनको एम्पावर नहीं कर सकते, आपको बस वो प्रॉब्लम्स पकड़नी है उनकी. फॉर एग्जाम्पल आजकल अगर आप देखो तो इतनी सारी एप्स आ गई हैं जो आपको खाता बुक वगैरह मैनेज करने में हेल्प करती हैं. तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लोकल स्टोर आउट देयर, उनको खाता बुक नहीं आता मैनेज करना. तो अगर आप ये ऐप उनको दे देते हो और वो इनेबल कर देते हो कि वो मैनेज कर पाते हैं, यू आर इनेबलिंग द एसएमईज. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में. तो आइडिया इज कि आप उन्हें रीच आउट कैसे करोगे, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है. तो वो आपकी स्ट्रैटेजी आप कैसे करना चाहते हो. अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हो तो आई विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड व्हाट्सहैश. इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट करना चाहते हो तो इट्स अ ग्रेट ग्रोथ हैकिंग प्लेटफॉर्म एज वेल. सो इट्स डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड, गुजरात बेस्ड एंटरप्रेन्योर. व्हाट्सहैश ये अच्छा टूल है जो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है. So yes, Sir, if I may ask about this further. Yeah, please. So you mentioned a B2B business. What if you're targeting a B2C business where the marketing communication becomes more important because you need to position your brand in such a manner? So would the strategy differ in such a case? Of course, because that's one of the problem, the big baskets or the growers are not able to penetrate the B2C business yet in the rural areas. They're still struggling. So if you talk about growers, they mainly, market in the metro cities out there. So I believe the rural cities have different problems. They have a different understanding, and you should understand the problem and उसके हिसाब से solution निकालना पड़ेगा. But अभी के लिए it's very tough to market on rural platforms. But yes, आजकल बहुत सारे OTT platforms आ रहे हैं जहाँ पे लोग TikTok, like imagine TikTok as marketing platform. TikTok को अगर हम replace करते हैं दूसरे platform से, आजकल बहुत सारे ऐसे companies आ गई हैं जिनकी apps rural audience को tap करती है. तो वहाँ पे आप advertisement के through पहुंच सकते हो, but not as an organic way. So you have to find some ways to reach out the rural audience. Very good question out there. So my question is, when we talk about startups, initially like the funds are very low. So how to strike a balance between the operational fund and the funds for marketing or promotion of your business? So first of all, as a bootstrap startup, think about you don't have money to invest in marketing. You are not investing in the paid marketing to acquire customer. You have to think about the organic ways of taking your customers online. तो आपको शुरू में तो पैसा खर्च करने से बचना है और आपको सोचना है कि existing resources के साथ में कैसे मैं अपने यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकता हूँ. इट कैन बी थ्रू पार्टनरशिप्स, इट कैन बी थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी थ्रू योर पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल. तो आपको जो तरीका ठीक लगे आप उससे करो, बट हम पेड मार्केटिंग में शुरू में तो पैसे नहीं खर्च कर सकते इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस. Good evening, sir. Vaishnavi this side. Thank you for this session. It was very insightful. I got to learn a lot of marketing hacks. And sir, my question is that since you said that during the 2008 recession, there were a lot of businesses that emerged during that time. So according to you, is it a good time to launch a startup during this COVID era? Like, do you think that it is a good time? 100% agree, because if you talk about investors, आज भी investments हो रही हैं, आज भी investors पैसा invest कर रहे हैं और आज भी कंपनीज ग्रो कर रही हैं. If you talk about the pandemic is the right time, it's absolutely right time depending which kind of business that you want to run. Because अगर आप entrepreneur हो और serial entrepreneur हो तो आप टाइम के हिसाब से अपना बिजनेस लॉन्च करोगे. तो आज का टाइम क्या चीजें मांगता है? मोर ऑफ डिजिटल इनेबलमेंट, ऐसी चीजें जो डिजिटली एक्टिव हैं. तो थिंक अबाउट एनी प्रोडक्ट, थिंक अबाउट एनी इंडस्ट्री जहां पे डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो आप उस इंडस्ट्री को पिक करके उस इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे,
So this is the best time to launch your venture out there. But you have to understand the industry as well. I hope that answers your question. In case you want to ask any question, please ask that. Also, sir, there has been a lot of debate going on between the digital marketing or traditional marketing. Like people have started really debating about it. So, what is your take on it? Should startups like go for traditional marketing practices or go for digital marketing? So, I believe इसका क्वेश्चन का आंसर ही आपके उसमें छुपा हुआ है, आपके क्वेश्चन में छुपा हुआ है. मैंने इसके ऊपर में स्लाइड भी बनाई है. Let me just take you to here. Okay, this one. So if you talk about traditional versus digital marketing, the first thing is very much is reach. मैं बैठे बैठे आज आप लोगों से बात इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी का प्रमोशन हो रहा है स्किल सर्कल का, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से पॉसिबल ही नहीं है, बट डिजिटल से पॉसिबल है. तो वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द रीच. आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रीच करके यूएस, इंग्लैंड, पंजाब, पटियाला, जयपुर हर जगह पहुंच सकते हो. ऑफलाइन से नहीं पहुंच सकते जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है. सेकंड, व्हिच इज माय फेवरेट, इज टारगेटिंग. यू अंडरस्टैंड टारगेटिंग? इफ आई हैव योर ईमेल, if I have your contact number, I'll be remarketing my stuff to you again and again. Take an example. I have your email, right? I have your contact number. If I add this details to my marketing funnel, आपको रोज स्किल सर्कल की ऐड दिखेगी. ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से पॉसिबल नहीं. तो टेक्निकली you are in my funnel right now, right? Third is the price and ROI. The kind of money I spend on digital platforms, उसका जो ROI मिलता है वो काफी अच्छा है, जबकि ऑफलाइन का ट्रैक करना बहुत मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक टीवी एड चलाई या फिर आपने एक न्यूज़पेपर एड चलाई, इट्स वेरी टफ टू ट्रैक द ROI ऑफ इट. ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यू कैन ट्रैक व्हाट्स द ROI इज. तो मुझे लगता है कि देयर इज नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग इज द थिंग हैपनिंग राइट नाउ, एंड द पीपल हु आर डूइंग डिफरेंटली, दे आर गोइंग टू स्टे. So what are your thoughts on the marketing campaign of Cred recently? Of one? Cred. So Cred. Your thoughts on the marketing campaign of Cred? Interesting. There's a lot of perspective to it. If you just check out the Cred Facebook page, they don't have even 1,000 followers. They're not very active over there. So they go very different. They didn't go traditional marketing. कि Facebook पे page बनाया, followers किए, सब कुछ किया. They build an influencer marketing strategy. The entire brand, if you talk about the recent campaign, built on Instagram, build on influencer marketing strategy. कि जितने भी popular faces हैं इंडिया में, जो इंडिया के लोग फॉलो करते हैं, उनको ऑनबोर्ड करो, उनकी फॉलोइंग को ऑनबोर्ड करो, और फिर पेड कैंपेन उन्होंने पैसे खर्च किए. फिर वो आईपीएल पे गए. आईपीएल इज वन ऑफ द आईपीएल इज जस्ट लाइक सुपर बॉल इन द यूएस. वो एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे पूरा दुनिया, पूरी इंडिया देख रही होती है. तो जैसे सुपर बॉल पे बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे खर्च करती हैं, क्रेड ने भी वही किया. बट द फनी थिंग इज क्रेड रेवेन्यू इज 0, right? So that's my question. Like the clarity of the ad and the user base is really small, but they spent around 100 crores on the ad. Yes. So what is the rationale behind that? Very tough to understand such businesses, right? That's how new age businesses is. अगर आप उसको criticize कर रहे हो, that might be one perspective. But after 2 years, you'll be surprised. They have maybe $1 billion revenue out there. They cracked a model out there. The idea is if you're able to crack the model, you are the winner out there. But till the time you are not able to crack the model, people will say you are a loser. That's how industry works. But Amazon even was not profitable for the first 5 years. They become profitable after 5 years. So it's totally profitability is not the issue, but it's just like they have tapped the data of the people who have credit card in India. आज तक किसी के पास नहीं था. आज तक किसी के पास में सिबिल स्कोर वाइज डेटा नहीं था इंडिया के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का. क्रेड के पास में है, और ये डेटा बहुत यूजफुल हो सकता है अगर इसको मोनेटाइज सही तरीके से किया जाए. तो they must be figuring out a plan. That's I can hope. All I can say that. Thank you, sir. Okay. For the people who don't know Cred, it's an app to pay your credit card bills out there. Any other question, guys? I can just take 2 questions now. I'll just wrap it off. The people who want to go for bootcamp, the URL is skillcircle.in/bootcamp. You can go and register yourself, and the batch will be starting from the first week of December. Perfect. Any other question you want to ask? Please let me know. So I have a question. My name is Devlina Sen, and my question is, what are your key startup metrics, and how do you usually measure success in the startup round? Oh wow, that's a tough question. Success is a kind of I should say that is more of your state of mind. कोई 50 करोड़ कमा रहा है तो वो सक्सेसफुल है, और कोई $1 बिलियन कमा रहा है उसको लगता है अभी मैं सक्सेसफुल नहीं. तो इट्स मोर ऑफ योर मेट्रिक कि आप किस मेट्रिक को सक्सेसफुल बनाते हो. बट इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे बनाता है,
तो आजकल जो बात हो रही है वो जीएमवी पे नहीं होती, पहले जीएमवी की बात होती थी कि आप कितना बिजनेस अपने स्टार्टअप के थ्रू करते हो. फॉर एग्जांपल बिग बास्केट कितना सामान बेचती है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो जीएमवी कहलाता है. बट टेक्निकली दैट रियली डजंट मैटर, मैटर इज प्रॉफिट्स. तो बहुत सारे इन्वेस्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं. इफ यू टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना. बहुत सारे लोग डेटा पॉइंट्स को देखते हैं. जैसे अभी आपने देखा होगा एक ऐप है शेयर चैट. कितने लोग शेयर चैट को जानते हैं? शेयर चैट, शेयर चैट. Do you know an app called Share Chat? No? Okay, let me just Google it for you. Share Chat. So if you see, Share Chat is an app for, you know, sharing romantic videos, शायरी, funny comedy and all that stuff. आपको शायद बहुत फालतू लगेगी, but if you take Share Chat funding, this app raised almost $100 million. $100 million ये रेज कर चुकी है. इंडिया की बैंगलोर बेस्ड कंपनी है. And if you talk about revenue, Share Chat revenue, it's 25 crores. That's it. That too in loss. और वो भी इस कंपनी ने नहीं बनाया, इसकी कोई पेरेंट कंपनी ने बनाया. शेयर चैट ने 0 रेवेन्यू बनाया. तो फनी थिंग, यू नो, आपको लगेगा यार ये बेकार कंपनी है, इतना सारा पैसा रेज करके बैठी हुई है. $100 million. $100 million बहुत बड़ा अमाउंट होता है. 1 मिलियन 7 करोड़ होता है. 700 करोड़ रेज करके बैठी हुई है और इसका प्रॉफिट 10 लाख रुपए भी नहीं है. बट नाउ इट्स गेटिंग एक्वायर्ड बाय गूगल. तो अगर आप आज की न्यूज देखो, शेयर चैट एक्वायर्ड बाय गूगल. दिस इज न्यू एज बिजनेसेस. तो आपको बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि स्टार्टअप में सक्सेस मेट्रिक क्या है. तो इट डिपेंड ऑन द वेंचर एज वेल. अगर कोई आप टेक्नोलॉजी आइडिया बना रहे हो जो बिलियन लोगों को लाने वाला एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में, इसको मैं प्रॉफिट से नहीं चेक कर सकता कि कितना प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वो डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोल रहे हो लाइक ई कॉमर्स, तो उसमें फिर मैं प्रॉफिट करूंगा कि कितना यूजर्स आते हैं आपकी साइट पर, कितने ऑर्डर्स आते हैं पर डे, कितना प्रॉफिट है, कितना जीएमवी है, वो सारी चीजें मैटर करती है. तो इट्स डिपेंड ऑन द सेगमेंट ऑफ द बिजनेस एज वेल. आप किस बिजनेस सेगमेंट में. थैंक यू सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. You were nice audience. I really like you guys. आपको एटलीस्ट नींद नहीं आई, because startups are not easy. They're tough. Lot of people, you know, सुन के ही सो जाते हैं कि यार नहीं, यार स्टार्टअप नहीं हो रहा, मैं अपनी जॉब करूंगा एक अच्छी एमएनसी में, 20 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, आई एम रुड़की के बाद में, आई एम अहमदाबाद, you know, जो भी आपका कॉलेज है, तो अच्छी खासी हम लाइफ जिएंगे. But lot of people sacrifice their jobs to start their own company. It's not easy. I have a respect for the people who start their company. It's very tough. तो अगर आपसे हो रहा है तभी करना, नहीं हो रहा तो नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत अच्छी लाइफ है जॉब वाली भी. आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो बहुत सारी कंपनीज के लिए. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरप्रेन्योर्स विद इन द कंपनी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. इट्स टोटली योर कॉल वेदर यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर, यू नो, करियर प्रोफाइल सूट्स यू. सो दिस वाज शिवम आहूजा. शुड आई रैप इट ऑफ? और मैं यहीं पे सेशन को खत्म करूंगा और आपको आपके प्रेसिडेंट को अपनी कॉल ट्रांसफर करूंगा सो दैट दे कैन, यू नो, एंड द सेशन. सो बैक टू यू गाइस. द सोसाइटी. Okay. So I have one question, if you allow the time. Yes. Sir, I've had an experience of working in 2 of my startups previously. So for the second of my startup, I have gone to investors and I've met a lot of people. So what happened was, in the end, it was very difficult for me to sustain with funds because it was a bootstrapped startup. So I was meeting to investors and everything, but then they say na that, you know, 1000 din ka ration, maintain 1000 din ka ration till the time you do not get the funding. So that became a challenge for me. So how do we people strike a balance between, you know, the profits as well? Because as you shared the story of ShareChat, that company is not making revenues today, but still it received funding. So it maybe it kind of a luck or maybe user base is something, but how to manage that? Very good question, Madha. I really appreciate you for, you know, asking this question. So if you see, you know, why do startups shut down? These are the 5 reasons. On the screen, you are able to see it. No need of product. बहुत सारे लोग ऐसी चीज बना लेते हैं और लगता है कि, you know what, this is the next big thing. But कोई खरीदता ही नहीं है उसको. At the end of the day, they shut down. The second biggest reason is exactly the same you said. They are run out of money. They don't have a sustained revenue. Exactly. They are not a sustainable, you know, bank account money कि किसी इन्वेस्टर ने पैसा दिया हुआ. This is the very most important reason कि startup बंद हो जाते हैं. तो आपकी कंपनी में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो कुछ ना करे, सुबह से लेकर शाम तक बस पैसा रेज करे. सुबह से लेकर बस शाम तक पैसा रेज करे.
इन्वेस्टर का रेज करे, कस्टमर का रेज करे. अगर आप बूटस्ट्रैप कंपनी हो तो कस्टमर से पैसा रेज करो. अगर आप इन्वेस्टर फंडेड कंपनी हो तो उसका फुल टाइम काम ये होना चाहिए कि मुझे पैसा रेज करना. अगर वो नहीं है, have that guy or girl as a co-founder, because the successful entrepreneurs knows how to raise money. So if you understand this thing, it's very much important. तो आप अगली बार जब स्टार्टअप करोगे तो किसी KPMG बेन वाले बंदे को साथ में रखना, या फिर एटलीस्ट एनी गाय हु वर्क इन VC कंपनी. मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना VC कंपनी में काम करते हैं पहले और फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर अपना स्टार्टअप करते हैं, फिर पहली बार में ही सीधा 5 मिलियन उठाते हैं. This I have observed a lot of times. So if you really want to raise money, either have a girl as a co-founder or founding team member in your company जो VC कंपनी में काम कर चुका है, और वो एश्योरेंस ना मत कर पहला राउंड मैं करवाऊंगा. That's very much important. Yes, sir. Sir, to add to my question, sir, the models like Jio, like letting people use the platform for a year for free and then making them pay for the platform, as a recurring amount for years after year. Is that model not working these days? Because my platform was working on the same model, but it was on a different line. अलग ही दुनिया है, because Jio is not a startup. Jio is he's a giant. It's a dinosaur. वो स्टार्टअप तो नहीं है, उनके पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं. तो टेक्निकली जियो से हम नहीं जाते. अपने प्रोडक्ट को कंपेयर भी मत करना. जियो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट मॉडल आउट देयर. इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस व्हिच नीड्स लॉट ऑफ मनी ऑन द डे वन, get and raise money. As simple as that. You can't run a company without drawing funds. आपके साथ में लोग काम ही नहीं करेंगे. तो आपके पास में अगर पैसा चाहिए शुरू में तो आप रेज कर लो. कितना चाहिए that can be debate. Thank you, sir. Welcome. Sir, do we have any discounts? As I've gone on the website. I'm so sorry for that. But there is a number in the below of the bootcamp. You can contact from there. Okay. So it was a lovely session. I was actually going to register on the bootcamp. It was just good. Society heads, back to you. Thank you so much for having me here. And it was a lovely audience. And मैं कोशिश करूँगा अपनी founding team के लिए 1-2 लोग आपके कॉलेज से जरूर hire करूँ. Because I really want some guys from IIM, and I believe they can add a lot of values to my table. Okay, thank you very much, sir. All the experiences and strategies that you shared with us today are definitely going to help us in the long run. And I'm sure today you have inspired many of us. It was truly a knowledgeable session, and we are really thankful to you for sparing the time for us from your busy schedule. Thank you so much, sir, for being here. Guys, look forward to connect with you on Instagram. So can I fire a quick question? Yeah, please ask the last question. So we had the pleasure of hosting Dr. Ritesh Malik for a founders meet. So he told us about how he was a surgeon in Gangaram Hospital for 10 months and how he ventured into entrepreneurship. So sir, as we are I am a commerce student. As you said that in 2025 everything would be tech. So he went from being a doctor to launching a co-working space. How as we as students can go from a finance background to something in a different domain? You are asking this? Yes, sir. So how do we I would say have the conviction for that? The right word is exposure. रितेश को रातों रात सपना नहीं आया था एक कोवर्किंग स्पेस खोलने का. वो यूएस गए थे, उन्होंने देखा वीवर्क क्या है, उन्होंने देखा और कौन कौन से कोवर्किंग स्पेसेस हैं. इंडिया में आए, 91 स्प्रिंग बोर्ड देखा, उन्होंने देखा कि इट्स नॉट अ वेरी प्रीमियम स्पेस. आई वांट टू क्रिएट अ प्रीमियम स्पेस. 91 स्प्रिंग बोर्ड के ओनर को बोला कि क्या हम फाउंडर बन सकते हैं, को-फाउंडर बन सकते हैं. प्रणय ने बोला नहीं. Then he started his own co-working space. तो आपको जब तक आप exposure नहीं लोगे ना, and the best way to take exposure is internships. Work as an intern in some companies so that you can get exposure. When you get the exposure, ideas will be in your mind. तो बहुत जरूरी है exposure लेना. ऐसा नहीं कि रितेश सर ने ऐसी पता नहीं कहीं से co-working space का idea सोच लिया. He went to US, he stays in co-working, work from co-working, look and feel the product और देखा कि इंडिया में नहीं है. And if you talk about this Innovate, I'm sitting in Innovate only. There's one of the most premium co-working space in India. That's how they build it. But the idea is you should have exposure to building a product like Innovate. Thank you, sir. It was really insightful. Answer. Okay. Now we wrap it. I'm so sorry, society heads, you are feeling trouble from these questions. I hope now we can do it. Yes, sir. But guys, thank Yes, you sir. Thank you so much. So sir. much, sir. Yeah. So look forward to have you connect with you on LinkedIn, Instagram, everywhere, in whatever the platform you're comfortable in. And I'll keep posting with your valuable content out there. So thank you so much for having me here, all the IIM students out there. And pleasure is all ours, sir. Pleasure is all ours. Thank you so much. Bye, guys. Take care. Thank you so much, sir.